Hi, I honestly love the simplicity of having this luxury of just press a button and um, ready to share whatever good thoughts or worth sharing, something that comes in my mind, and I can just share it with you all. So the I'm just like I woke up really early today in the morning, and I try and do that, but sometimes I succeed. So I've been reading a lot today, and a lot more on the lines of mental health and how life functions and the right attitude to have. Don't worry, मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ यहाँ पे. मैं हूँ भी नहीं, मतलब इतना खुद भी ज़्यादा हूँ, काफ़ी कुछ हूँ ऑफ कोर्स, तभी वहाँ हूँ जहाँ हूँ. लेकिन द इंटेंट इज़ दैट मुझे जो समझ आया ना, मैंने ना पिछले कुछ टाइम में ना अपनी लाइफ को वापस मोशन में आते देखा है. एक तरह से इसको चक्रव्यूह कहेंगे कि बहुत टाइम तक चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी, लाइक अ मिरेकल ऑफ लाइफ when it blesses you, when the universe is kinder to you, and there is a time when you start to question that why things are not moving despite your best efforts. I have blamed myself for lacking efforts and everything, and I was right at some point, but not entirely was my fault. So apparently now things are falling in place apne aap hi. So for example, I am getting to see and learn the lessons that I'm supposed to learn at this very time. The alignment of learning things that I'm learning is actually, what's the word? It's actually balancing each other so beautifully that it's happening at the right time and together. So I'm not talking about some magical wand here or some opportunity that I have grabbed. I'm only talking about the work that I'm doing and the areas that I'm working for ना. तो वो सारे ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, I have been training for सिंगिंग, लाइक क्लासिकल ट्रेनिंग चलता रहता है मेरा. लेकिन मेरा ना, जब मैं गाना रिकॉर्ड करती थी ना, तो मुझे मेट्रोनोम लाइक बीट मेरा छूट जाता था. मुझे ना ये ताल का थोड़ा समझ कम था. 5 साल लगातार ट्रेन करने के बाद भी ना वो एक चीज़ ऐसी थी कि मैं कहीं ना कहीं उसमें, तबले पे मैं गा लेती थी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग की बात आती थी ना, तो वहाँ मेरे साथ कई बार गड़बड़ होती थी. उस कारण से गाने का टेक्निकल तो ऑब्वियसली ख़राब होता ही था, साथ ही साथ इमोशंस भी ना डाइवर्ट हो जाते थे कई बार, बिकॉज द फोकस गोज ऑन द टेक्निकलिटीज. देन वो हो रहा था, तो मैंने ना कथक ज्वाइन किया बिकॉज of the grace that it brings to your body, and I knew that it will give me the rhythm. Simultaneously मेरी acting classes चलती हैं, and they cost me 1 lakh for 10 classes. I can't believe I'm doing that kind of expenses on me, but it's worth millions, honestly, because my coach is really good, and the value addition, the things that I'm learning, although they are only useful if I practice them on a daily basis. ये ऐसा ड्राइविंग जैसा क्राफ्ट होता तो अलग बात थी कि एक बार सीखा और लाइफ टाइम अपने आप चलता रहेगा. सो दिस मनी एंड दिस एफर्ट एंड द क्लासेस आर ओनली यूजफुल फॉर मी इफ आई एम रेगुलर एट इट. झक मार के करना पड़ रहा है यार प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ द अमाउंट दैट आई एम पेइंग. सो आई एम नेचुरली वैल्यूइंग द मनी, वैल्यूइंग द टीचर मोर, एंड आई एम बाउंड टू रिस्पेक्ट द हार्ड अर्न्ड मनी to not go waste because I'm not able to practice. Who, nobody else to be blamed. And in acting, I'm learning voice training, like आवाज, features training, eye movements. तो वो ना मुझे directly help कर रहा है मेरी speech में, because now I have decided to talk about things that I talk about, because I think I'm really, really good at this. I'm special. Like I have the power of holding millions, and I have the power to change lives. And I don't have to explain myself. I just know it because of the way the things that I talk about, they come from an experience of ages of isolation, spending time alone by choice, and a lot of reading and experiencing and curiosity on top of all. So my intent of making these podcasts is not to have likes and views. ऐसा होता तो मैं बहुत बार इसको शेयर करती. But I'm doing it because, a part of me is just feeling freaking proud of myself. Every time I come here to discuss something with you or talk about the very, very moment of an emotion that I feel is important to catch on to,
तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती थी, अब मैं पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रही हूँ. और थोड़ा सा अच्छा इस बात का फील होता है कि people are hearing, so there is a validation, of course, for the self. And on a larger point of view, there is an intent that maybe the way I talk is very different and may not be comprehensive for a lot of people, but there will be a very few people who can match my brain wavelength. For all you know, आप भी शायद मेरे जैसा सोच रहे हो, and you get validated instead. You feel that अरे यार मेरे जैसा कोई और भी सोचता है, मतलब there is some truth to this. So you continue believing it more and more, so there is a beautiful thought attached to it. Going forward, so I was talking about how each and every skill that I'm working on currently put together is helping each other, and it's nothing but a miracle. I don't know if it is retrograde or planetary motions that brought these changes. So basically, if you astrologically, if you talk about, numerologically, if you talk about March onwards, the time is supposed to be good for a lot of people. I'm one of them. मुझे लगा था कि opportunities आनी शुरू हो जाएंगी. I will be busy with work, but apparently, I feel that universe is always not testing me, but preparing me for the right things. होगा क्या ना, if किसी भी चीज को समझना ना इतना आसान हो जाता है. अगर आप ये सोचो कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों वो हुआ, तो जो चीजें हुई वो तो दिख के आप खुश हो ही रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आज एक फिल्म आई, मैं बहुत खुश हूँ फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई फील प्राउड, आई फील ग्रेट, एंड आई गो ऑन द शूट. आई परफॉर्म एवरेज, आई फील गुड, एंड आई हैव दिस ignorance about how better I could have done the job. Or even if there is a slight acknowledgement of the performance that could have been better, but it's not been taken seriously. You are full because of the praises and the selfies that fan clicks. So there is no time to see where you really are. Now, मेरी stagnancy ने मुझे इतना हिला के रख दिया that I was so driven and I was not left with any other option. If I have to dream big, then I have to be irreplaceable. And to be irreplaceable, there are steps that are super, super hard to take. So to become an actor, you have to take acting classes. सब यही कर रहे हैं. And if I also do the same thing, I take acting classes in the day where 50 people are going, paying 25,000 rupees, and going in a place wherein there are you're going for getting casted, not to learn the craft. So you choose classes wherein you think you can find contacts, or where you think people are in casting so that they can cast you, they can choose you. But why? How come? तुम जैसा सोच रहे हो वैसे 1000 लोग और सोच रहे हैं, वो भी जा ही रहे हैं ना. So, and then in the evening you're partying. Tell me, if I do the same thing, how can I expect a different result? It's not possible, right? This is just how law of nature functions. So coming back to the point, I was left with no option but to work freaking hard. And to work hard, it's about traits, it's about habits, it's about procrastination, it's about knowing yourself at the first place. So most people, I will not say myself, most people are so ignorant of who they really, really are. So there is a psychosis, there is a psychological concept that is implying on a lot of people. If I have to give you a statistical number, that is about 97% of us, we feel we become psychological liars. So as much as to others, we become more deceptive to ourselves, which means मेरा एक दोस्त था और उसकी आदत थी कि वो ना अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताता था. पूरे टाइम उसको अपने बारे में इतनी ज़्यादा बातें करनी होती थी. And he was not intimidating in his tone. He just wanted to feel that dopamine high that he feels while talking about things that he thinks he's going to do. None of these things are translated in any shape or form as of yet. It's just a freaking idea. Like it's equivalent to when you get high on some kind of psychedelic, or if you get high on some kind of alcohol or any kind of things that you take, you feel elevated and you come up with the concept of making things work. Idea starts to flow, and then you give gyan to yourself and to other people, and then you decide you're going to change the life now that you have found your answers. But nothing happens the next day. You're not able to wake up to begin with because of the choices that you made the previous day.
nothing is happening, but you believe that is happening is the worst part. लोगों को झूठ बोल के अपने आप को अच्छा फील करा लो, चल जाएगा. But when you're not aware of your own reality, how will you correct? And how will you even know to begin with कि correct करना क्या है? So I had two beautiful traits, if you have to ask me that what make me gold for the soul that I am, there are only two traits, and clearly they are not what you're thinking it is. That is, one, curiosity, and number two is self-awareness. Believe me, these two have been like दो पैर, और जैसे एक पैर आगे बढ़ता है ना, दूसरा उसके सपोर्ट में आगे और बढ़ाता है. And it's such a beautiful mechanism of how things actually function. There is a method to madness. There is a concept of if you do this, you'll get that. But we don't want to believe that. We want to believe in magic and law of attraction and some shallow concepts like that because they don't require hard work. That's easy job. And I really love the idea of how people are so pseudo क्या बोलेंगे इसको, mental masturbators basically, pseudo intelligent basically, जिनके पास ना इतना लिमिटेड नॉलेज होता है और वो नॉलेज कोई काम का नहीं होता है. वो 2 लाइन पढ़ करके उतना ही जानते हैं और उनको एक्चुअल उसका जो इम्प्लीकेशन है वो भी नहीं पता होता, बिकॉज यू हैव नॉट थिंक इट थ्रू, यू हैव नॉट थॉट इट थ्रू. Wrong English. Okay, you have not thought it through, so you're giving it to others for the sake of grabbing attention and feeling good. But apparently you are shallow, you have nothing. And believe me, some people are so repetitive. Some of the actors I have seen, they're so limited in their mindset, in their thinking process. तो awareness का तो सवाल ही नहीं उठता. आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत डिफिकल्ट बातें कर रही हूँ या पता नहीं सिर के ऊपर से जा रही हैं बातें, लेकिन मेरे ख्याल से कभी ना आप भी इस पॉइंट पे आओगे जब आपको रियलाइज होगा कि हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. इट्स माइंड बॉगलिंग. बट सो कमिंग बैक टू माई सेल्फ अवेयरनेस, आई सी माई ट्रूथ, आई नो माई रियलिटी, good, bad, ugly. So it may come across as pride and ego and overconfidence. जाहिर सी बात है, जो सक्सेसफुल होते हैं उनको आप बोलते हो कि घमंडी हैं, क्योंकि बुरा लगता है कि कोई और सक्सेसफुल है तो उनका ह्यूमन होना तो एक्सेप्टेबल नहीं होता कई जगह पे. लेकिन आई कम फ्रॉम द स्पेस ऑफ अटर सिक्योरिटी and insane love that I have for myself, that I can't stop praising about my beautiful traits. And I'm equally open about the things that I lack. And I talk so openly about it and I take pride in it. So there is a difference, right? You don't come from the space of self-sabotage because that's not helping. That kind of self-awareness you don't want. Rather be unaware is better for you. The level of, it's the intent, right? You know your weakness. You know कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है और आपने 2 साल ट्राई किया, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा. बड़ा मुश्किल काम है. आपको पता है कि आपको फोमो है, आपको लगता है आपको पार्टी करनी चाहिए तो आपका काम में मन नहीं लगता. आप प्रयास कर रहे हो, रियाज करते करते फोन चला रहे हो, गिल्टी प्लेजर्स, राइट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, आप ये सब कर रहे हो, नहीं छूट रही आदतें. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू साइकोलॉजिकल conditioning that happened over the period of time because of what happened to you, and also the habits that you have to get rid of, which has been there with you for ages and years. So definitely it's not going to be easy, but I think, what is the first step of it? Everybody talks about discipline and it sounds fancy and it sounds like momentary motivation of अरे अब तो पता चल गया. लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आपको लगता है कि यार डिसिप्लिन हुआ कैसे जाए, ये कौन बताएगा. comes down to the very basics of everything. Like अगर sentence बोलना है तो ABCD पे ही आना पड़ेगा. उम्र चाहे जो भी हो, औदा चाहे जो भी हो, you have to start from the basics. Even if it hurts your ego and intelligence, doesn't matter. So basically, go back to the unhealed part of you. I had this habit of eating sugar every single time when I am stressed out, and specifically when I have a fight with my mom, I will want to have sugar immediately. I will want to have dark chocolate immediately. And लगता नहीं ना कुछ गलत है, because hey,
और कभी नहीं लगा मुझे कि मैं चीट कर रही हूँ, मुझे लगा कि आई एम जस्ट सेटिस्फाइंग माई सेल्फ. देयर आर डीपर मीनिंग टू इट इज that you are filling a vacuum that you are not able to fill otherwise, because that is not in your control. So whenever I had a tiff with my mother, I felt not appreciated, not seen, या बहुत टीस पैदा होती है अंदर से. इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ येट. अभी तक नहीं, मतलब इतना करने के बाद भी नहीं, इतना अचीव करने के बाद भी नहीं. You don't feel differently about me. We want different things, right? तो जब वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में उन्होंने कुछ बोल दिया, तो इतना घर कर जाती है कि लगता है ये सारा काम बेकार है. देखो ना, कोई कह भी नहीं सकता कि ये चीज़ें रिलेटेड हैं, बट है. एंड हाउ इज इट ट्रांसलेटिंग टू हैबिट्स एंड डिसिप्लिन is because if I'm eating a brownie to comfort my vacuum, then I will keep eating every single time. It will be impossible to control my urges, because you can't control it, because it's not your fault. And I will keep sabotaging myself. That's when my self-awareness will turn into self-sabotage behavior, because I'm trying, but हो नहीं रहा है. मेरे में इतनी कमी है कि मेरे ये बस का नहीं है, ऐसा तो मैं बन ही नहीं पाऊंगा. और ये तो मैंने फिर भी बहुत ऊपर के सेल्फ अवेयरनेस की बात करी. लोगों को बेसिक अवेयरनेस नहीं होती है कि कहाँ पे कितनी बात करनी है. जस्ट टू बिगिन विथ, किस समय किससे क्या बोलना है, कैसे खुद को कंडक्ट करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. जीरो अवेयरनेस. एंड आई एम अमेज्ड बिकॉज आई एम गिफ्टेड विद दिस, और आई हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड ऑन अवेयरनेस, बिकॉज पता चल गया था कि यार जब देखोगे नहीं ना, देखे बिना होगा नहीं. अपने आप से बचने के लिए अपनी कमियों को ना देखना पड़े, इसके चक्कर में द प्राइस दैट वी पे ऑफ इग्नोरेंस एंड द लाई दैट वी टेल आवरसेल्व्स, oh my goodness, I can't even begin. I don't even want to go there. So basically my driving force is, आपको लग रहा होगा मेरी बातें सुन के कि यार ये लड़की बहुत ड्रिवन है, मैच्योर तो नहीं बोलोगे मुझे शायद, और ड्रिवन है, मोटिवेटेड है, और शी लाइक्स टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. बट नहीं यार, ये ना, ये जिस तरह से मैं साउंड कर रही हूँ ना, इट्स नॉट बिकॉज आई एम गुड एट टॉकिंग और आई हैव अ वे विथ वर्ड्स. नो, यू कैन एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी लर्न इन एक्टिंग, यू नो. कन्विक्शन ना फेक नहीं कर सकते आप, दिख जाता है. कोई चीज़ अगर आपने महसूस की है, सफ़र किया है, कम से कम 2 साल सफ़र किया है टू चेंज योर सेल्फ, एंड स्टिल यू फेल्ड, वो आपका सच बन जाता है. और वो यूनिवर्सली भी सच होता है, जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. शायद आप भी डिनायर में होंगे, लेकिन करेंगे when you will face this on the face. Face this on the face, nice. So it hit me hard, and I wasn't denial. I'm special, I'm unique. There was a slight sense of entitlement that I'm special, and that continued because of the isolation. You live in your bubble, you think other people are stupid, or they are not intelligent enough, or they don't work hard enough as much as you do. बहुत टाइम की बात समझ में आया बाबा, सबको वैसा ही माइंडसेट है, सभी वैसे स्ट्रगल्स हैं, सबका ही सेम स्टोरी है. एंड दैट ब्रोक मी डाउन. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विथ रिच किड्स, comforted kids, people who are in a comfortable zone, who are very pampered. आप देखो ना, केस स्टडीज हैं, लाइफ टाइम केस स्टडीज हैं, किसी का भी केस ले लो. वेरी रेयरली इट हैपन्स कि comforted kid या बहुत लाड़ प्यार में पला बड़ा बच्चा aggressive हो या hungry हो अपने आप में to get something, because human behavior is working there. If you're full, you will not feel the need to go anywhere. If your pockets are full, it will actually not happen unless you are creatively driven to do something, or you want to have another motivation to be an individual of your own. You know what? That's a different case. 1 in a million. What a rare combination, right? How things are very beautiful. Chaotic but beautiful. So yes, इतना लंबा मैंने बोल दिया, but मुद्दा ये था, how things are falling in place is, there are a lot of things that I'm learning by my self-awareness and my curiosity and my reading. कुछ lessons ना जो मुझे सीखने चाहिए ना, वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, to make me see what I'm still missing to see. Universe always gives signals, signs. It whispers right into your ears. It comes right onto your face in the form of people, what they say, billboards, hoardings, song lyrics. It can come and resonate with what you were thinking or you were worried about or doubtful about.
in the form of answer. But because you don't think miracle is possible because your life is boring and basic, you discard those voices and signs and whispers. I didn't do that. I never do that. I am a person, I think ये जाहिर सी बात है, जो इंसान खुद को प्यार करता है ना, वो ऑलरेडी एक एलिवेटेड फ्रिक्वेंसी में होता है और उसका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है. और जो खुद को प्यार करेगा वो अपने बारे में ना एक एक बारीकी से खूबसूरती को निहारेगा. तो मुझे अपने बारे में पता है कि मैं इंट्यूटिव तो हूँ. किया है शुरू में इग्नोर, बट बहुत जल्दी पकड़ लिया. तो मेरे पास टेड टॉक का कॉल आया from Hyderabad College, and guess what the topic was? The topic was the butterfly effect. मुझे नहीं पता था honestly. मुझे रिपल इफेक्ट पता था, डोमिनो इफेक्ट पता था, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं दिया. क्यों ध्यान दोगे ना, ये अकर ही नहीं किया आपको. And this is exactly what I needed to hear, because despite working on 10 things, मुझे लगने लगा था कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया था कि आई एम वर्किंग ऑन एवरीथिंग आई पॉसिबली कुड and I'm not missing on anything. होता है ना ऐसा. But the root cause of me not being able to get discipline earlier or procrastination more is because I don't understand the impact and influence of small actions and the effect of it in a longer run. छोटे छोटे एफर्ट्स जो है ना, उनके रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते. तो हमें लगता है अगर हम 5 दिन डिले हो गए, 1 महीना डिले हो गए किसी चीज़ में, तो क्या ही हो गया, नथिंग विल चेंज. बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, गुडनेस, इट विल हैव एन ह्यूज इम्पैक्ट. इसको बटरफ्लाई इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इट्स ऑल्सो नोन एज केओटिक थ्योरी, केओस थ्योरी. केओस थ्योरी इसलिए कहते हैं कि आपकी टाइमिंग एंड डिसीजंस आपकी ज़िंदगी के कोर्स को डिसाइड करते हैं. वो इतने स्मॉल डिसीजंस होते हैं कि आपको लगता नहीं कि आपने कुछ किया, लेकिन एवरी लिटिल थिंग दैट यू डू विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस इन अ लॉन्गर रन. बट वेदर यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट किस चीज़ ने क्या रेपरकशंस किए या क्या अच्छे चेंजेस ला के दिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड इट इज chaotic. It's impossible to define it. And the shape of that chaos in the form of a frequency and wavelength looks like a butterfly. On the other hand, not metaphorically but really, there's a person who invented this concept because he was checking weather and he was seeing that what are the factors that affects the environment and seasons. He was a क्या बोलते हैं जो लोग वेदर को पढ़ते हैं ना, वो. So basically that's when he realized the south of France में अगर किसी तितली ने पंख अपने फड़फड़ाए या तितली ने अपने पंखों को एक बार भी अगर मूव किया, the impact of that little tiny creature was seen in the form of a tornado in South Africa, poles apart, far distant, by any stretch of imagination not related. But hey, so the concept is the small changes makes a big difference, and I didn't think it like that. The basic core of me believing कि छोटी छोटी चीज़ें अगर छूट भी रही हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ी चीज़ों में. अप्रोच ही गलत थी, शुरुआत ही गलत थी, इंटेंट समझ ही नहीं आया. तो ये जो एक सुर लग गया ना इस चीज़ को समझने का, और अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी टेड टॉक, things are falling in place beautifully for me, and I hope they fall for you too. The podcast is long and I have no regrets. Love you.